happening on the ground with my colleagues who are joining us live from various cities across the country. We have Belly Thomas, who's joining us live from Bengaluru, Abhishek Singh, who's joining us from Lucknow, Aditya Vadhavan from Delhi, and Gulshan Grover from Gurugram. Let me in fact first go across to Belly Thomas for getting the ground pulse from Bengaluru. Belly, we are hearing that there are some bank strikes that are in place today. Could you help our viewers understand what the situation is like in Bengaluru? Are the banks closed? Are the banks open? And also, let's talk about the impact on the market regarding this free trade agreement. Shivani, so right now I am in front of this Canara Bank, which is the Kengeri satellite town branch in West Bengaluru, where you can see the bank is open. When I spoke to the security, they said that he is yet to get information on as to whether the bank could remain open. That would be only known at around 10:30 that it will be conveyed, is what we are being told. And as of now, transactions like check withdrawal, cash deposits, cash withdrawals, and check clearances are being affected as of now. And this is the day 3 of the bank strike, as 25th was the starting day and 26th was a Republic Day, a public holiday. And today, 27th, again, we are in front of the bank. It is open, but yeah. They're saying that we need to get permission from the manager to stand in front of the bank. So this is the situation. As of now, the bank is open, and we are yet to hear from the bank authorities that whether it would remain closed, because they'll have to get the information from their seniors as to whether the bank would remain closed or open today. That would be decided around 10:30 is what the security personnel tell us. So I had been also to other banks here, private banks as well, but the flow of customers are kind of less. But what we are being told is that the bank is open. Services such as cash deposits, cash withdrawals, and check clearances can be done. And I happen to speak to a private bank's manager also, where they say that the banking transactions won't get affected, because though we take part in the strike, there are few bank staff here who would be working at the banks to take care of the transactions by customers. So this basically their demand is that 5 day a week work, which they said that they would extend their work timings to 40 minutes per day from Monday until Friday, and so that they can take off on Saturday and Sunday. And so this is to improve the productivity of the bank, is what they say, and it is not at all against customers. So this is the situation here. The ground reality is that here, as we are in front of the Canara Bank, where it is yet to decide that whether it would remain open or not, only at around 10:30 when the manager arrives. That it would be conveyed to the bank staff here. Shivani. Right. In fact, let me introduce some context for our viewers as to why we are discussing banks right now, because banks across India may remain shut today, because employees are planning a nationwide strike. Now, the protest is aimed at pressing the government and authorities to implement a 5-day work week for the public sector bank staff. And like my colleague Belly pointed out, we are seeing some kind of disturbance. Now, this strike comes right after Republic Day. It is potentially extended. Whole planning was done after 23rd of the January, when the talks with the Central Labour Commissioner has failed, and this is also going to be the 3rd day of the holiday, which is raised to the risk of 3-day stretch of the limit of the blank closure and disruption of the customers for the union leaders of the United Forum of the Bank Union are going to be. If this bank strike goes on throughout the day, you will in fact face delays in bank branch-based services such as cash deposits,
check clearance, loan processing. Also, the bank unions argue that long pending promises from the government have been ignored. That is why they had no choice but to go on this strike. Now, public sector banks have already alerted their customers to plan transactions accordingly. Customers could also face service disruptions for nearly a week. This is in fact something that we are looking at. Cash transactions will be halted, document processings as well. The ATMs, mobile bankings and online transactions are however expected to continue. But this is something that will be affecting a lot of people. In fact, Belly, when we are looking at the demands that have been made by the bank unions, could you take us through the details of those demands and why specifically this strike is being called? Shivani, like my colleague from Lucknow pointed out that the bank staffers are waiting for a 5-day work culture a week. So basically, they wouldn't want to bring down the productivity of the bank as such, but they have kind of accepted to work 40 minutes extra from Monday until Friday so that they can be given a leave on Saturday. So this basically is going to increase the productivity of the bank, and a rested banker is the one who can offer a good service to its customers. And this protest or this agitation is not against the customers as such, but against the rule-making process as to the Chief Labour Commissioner, where a talk was initiated on January 23rd, wherein the leaders of the unions had met with the Central Labour Commissioner and had expressed this change to be made. But that failed, and that prompted the protest to be started from January 25th, and January 26th it was a Republic Day, a public holiday, and then they have continued to sit in for protest even today as well. So there is a kind of clarity. There is no clarity as such as of now as whether the bank will continue to remain open or closed. So yet there is an information that needs to come in from the union that should be passed on to the individual bank managers so that they will decide on whether to keep the bank closed or open. So now we are in front of a public sector bank. We can see customers are going inside. Sir, do you know anything about the bank strike that's happening today? Kannada. Okay. Bank strike. Strike in the information. Okay. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay. Thank you. So these are the affected customers who are interacting with me, saying that all of a sudden this cannot be done. This is unaccepted, and they want the services that needs to continue, and so they are coming here and with no clarity they are going back. ನೀವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ವಿ. Okay. ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ವಿ. ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay. ಬರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay. ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ? Okay. So this customer is saying that he has come in to deposit some cash for his loan process. So that is not happening, and there will be calls from the borrower that the EMIs are not being paid, and so these are the kind of these are the kind of problems that are being that will be more in number starting today is what this particular customer is indicating. Shivani. Absolutely, Belly. Like we have been pointing out, cash transactions, loan deposits, these are some things that will be affected today. In fact, the strike, like my colleagues have pointed out, is linked to an agreement reached in March 2024 between the Indian Banks Association and the United Forum of Bank Unions. Now, during wage revision talks, under the settlement, all Saturdays were supposed to become holidays for bank employees. However, this change has not been implemented, and unions have repeatedly raised this issue with the government and bank authorities. Let me in fact go across to my other colleagues who are also live with us. Let me go across to Aditya Wadhawan. Aditya, what is the situation like in Delhi? Are the banks open? What are the people saying on the ground?
Shivani, today, as expected, there's a huge, as we are standing at one of the SBI bank that is located at IT. I will just show you the visuals from here. Completely, as you can see, due to this strike, this bank is closed today. There's SBI branch in the ITO area, and definitely at this juncture, if you can just, I would just request my video journalist to pan across and show to our valued customers, please be informed, bank staff is on strike on 27 Jan 2026. Please use alternate channels. So clearly, this effect of this strike is clearly visible. A lot of inconvenience will take place for the Delhiites, as the bank is closed. So definitely, it will be a very concerning situation as to how the Delhiites will do their daily, banking activities, because usually all the physical related things related to banking is done physically in the bank, whether it is opening a bank account or showing a passbook, for getting the entry in the passbook. So definitely it will be a Herculean task for today for the Delhiites, because the bank people are demanding a 5-day week off rather than 6 days. So clearly at this juncture, it needs to be seen by how long will this strike of banks go, and what will be the reaction of the customers, because day-to-day activities, as we can see, there is one customer who has come to the bank, and sir, बहुत शुक्रिया NewsX से बात करने के लिए. आप आज बैंक की जैसे हड़ताल है, आप सुबह सुबह यहाँ आए हैं, तो क्या आपका किस काम के लिए आप बैंक पे आए थे, ये थोड़ा बताइए. थोड़ा मैं अपने बैलेंस चेक करने के लिए आया था. बैलेंस चेक करने के लिए, एज यू कैन सी बैलेंस चेक करने के लिए आए थे. तो सर आज तो अब तो बैंक वाले तो स्ट्राइक पर हैं, तो कैसे आप यहाँ बैलेंस चेक करेंगे? क्या कुछ नहीं कर सकता. किस तरह की दिक्कतें आ रही है? ई बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे या कैसे? ई बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे. So as you can clearly see, Shivani, the customer, one customer who had just come to check the balance in his account could not had to return back as the strike has started today, and definitely it needs to be seen how things unfold in this scenario. Whether this will derail the entire banking system or not, this needs to be seen. Absolutely, Aditya. In fact, we have been seeing that a lot of people have been affected. Our colleague from Bengaluru also spoke to a few people who were at the bank asking the people over there to process their work, because remember that loans, check dispersals, everything has been affected because of this strike. Let's go across to Gurugram now. Gulshan Grover is joining us from there. Gulshan, वहाँ पर क्या situation है? क्या वहाँ पर भी banks closed हैं, जो public sector banks हैं? देखिए, बिल्कुल जो सरकारी बैंक शाखाएं हैं सरकारी, वो इस समय बंद है. इस समय आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक बिल्कुल के नज़दीक में हूँ. इधर से बैंक ऑफ बड़ौदा है. दोनों के बाहर जो है वो लिखा हुआ है कि स्ट्राइक 27/1/2026, यानी बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है. पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो भी लोग अगर बैंक में काम कराने के लिए आ रहे हैं तो आज की स्ट्राइक है, क्योंकि साफ तौर से आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी सरकारी शाखाएं हैं वो इस समय बंद है. चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या जो भी अन्य सरकारी बैंक शाखाएं हैं वो सभी आज बंद है. कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस समय बैंक में काम कराने के लिए आए हैं. क्या काम कराने के लिए आए थे और आपको क्या बोला गया? भाई बैंक की स्ट्राइक है, यही बोला गया, और हमें एक चेक बाउंस हुआ था हमारी कंपनी का, तो वो चेक लेने वापस आए हुए थे हमें. ठीक है, और बाकी 1-2 स्टाफ है अंदर, लेकिन पूरी टीम वर्क पे नहीं है. ठीक है, यही बोला गया कि 5 डे स्ट्राइक थी, मतलब 5 वर्किंग डे जो अपने नहीं हो पा रहे थे. 27 को आज जैसे ओपन होना था बैंक, लेकिन इनके आज स्ट्राइक मतलब 5th हॉलीडे बोल रहे हैं ये अपना, कि हमें 5 दिन काम नहीं करना था, इस वजह से स्ट्राइक बता रहे हैं. यानी 4 दिन पहले बंद हो गए, 5वां दिन? हाँ, 4 दिन पहले हमें आए थे दोबारा. उस दिन तो बैंक बंद था, वसंत पंचमी की छुट्टी थी. उसके बाद अपना 4 सैटरडे हो गया, फिर अपना रिपब्लिक डे हो गया, संडे भी हो गया, तो आज ये 5वां दिन है, बैंक बंद है. तो कंपनी के काम से आए हुए थे, तो बहुत ज़रूरी था काम भी. तो कितनी परेशानी हो रही है अब आपको उस चेक की? परेशानी हो रही है क्योंकि हमें अपने रिकॉर्ड्स में डालना था कि हमें नई इतनी तारीख को चेक लगाया, वापस हमें वो डेट पंच करनी पड़ती है, लेकिन अब बैंक बंद है तो क्या कर सकते हैं.
अंकल जी आप भी बताइए क्या काम करना है? पासबुक पूरी कराने आए थे, 3 दिन छुट्टी थी, आज आए तो पता चला स्ट्राइक है। बड़ी परेशानी हो रही है, 2 महीने में तो आ जाए, कभी मशीन खराब मिलती है, कभी वैसे स्टाफ नहीं मिलता, तो बड़ी परेशानी होती वैसे है। आज आपको जानकारी थी कि स्ट्राइक है आज? आज पता नहीं क्या, क्यों 3 दिन की छुट्टी के बाद हम तो समझे थे आज। उम्मीद के साथ आए थे। हाँ जी, तो ये तो बहुत बड़ा पब्लिक के साथ परेशानी का काम हो रहा है कि बिना बताए स्ट्राइक कर दी। तो ये कितना जरूरी था आपको पासबुक यहाँ? बुक के लिए देखना था क्या आया है, पैसा नहीं आया है, पेंशन आई है नहीं आई है, तो उसके बारे में पता करना था, तो पैसे निकाल लेते उसी देख के पैसे। कितनी दूर से आए हैं आप घर पे? कहाँ है आपका घर? लगभग 1 किलोमीटर से है, सेक्टर 15 से। देखिए ये लोग हैं जो बैंक में काम कराने के लिए आए हैं, हालांकि और भी हमारे साथ लोग हैं। बैंक में जा रहे हैं आप? हाँ जी। तो क्या बैंक तो बंद है आज? ये तो पता नहीं था। नहीं पता। क्या काम कराने के लिए आए हैं? चेक करवाने आया था, पेमेंट आया नहीं। पासबुक वो कराने आए हैं? हाँ, एंट्री करवाने आया था। तो लेकिन अभी आपको जानकारी नहीं है कि बैंक के अंदर? देखिए अभी जानकारी हालांकि इनको नहीं है, और भी लोग जो है अंदर जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आप, इस समय बैंक के अंदर जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन अभी जैसे ही ये बैंक के अंदर जाएंगे, लेकिन इनका जो काम है वो नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो बैंक के अंदर कर्मचारी है वो ये बोल रहे हैं कि बैंक की स्ट्राइक है और आज कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि लोग पहले ही 4 दिन से परेशान थे कि 4 दिन पहले ही काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्राइडे के दिन बसंत पंचमी थी, सैटरडे को जो है ऑफ था, संडे वैसे ऑफ रहता है, इसके अलावा 26 को रिपब्लिक डे था, तो 4 दिन के अलावा 5वां दिन है, 5वें दिन भी यहाँ पर छुट्टी है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये भी बैंक बंद है, अंदर किसी भी तरह का कोई काम है नहीं हो रहा है। आप भी अंदर आए हैं काम? जी काम कराने आए। काम कराने आए थे? जी पैसा क्या बोला गया? पैसा निकाले, अभी तुरंत आए हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं। मतलब एटीएम से पैसा निकालने आए हैं आप? नहीं, चेक से पासबुक से निकाले। अच्छा, पासबुक। तो फिर बंद है बैंक? पता ना, मैं तो अभी आ रहा हूँ, गाड़ी खड़ा किया हूँ अभी जस्ट अभी जाने वाले थे। देखिए कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जब अंदर जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है। ये जो तस्वीरें हैं ये गुड़गांव की हैं। अक्सर अभी देखिए और जो लोग हैं, मैं और लोगों से बात कराऊंगा। ये पंजाब नेशनल बैंक है जो कि अभी ये बाहर आए हैं। आप अंदर हो आए, क्या बोला गया आपको? स्ट्राइक चल रहा है। स्ट्राइक चल रहा है। स्ट्राइक चल रहा है, तो अब काम नहीं होगा? नहीं, आज काम नहीं होगा। तो कितना जरूरी है ये आपको जो पता करना था, पेंशन आया नहीं आया मम्मी का, अभी तक पता चल नहीं रहा। पहले जानकारी थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। नहीं। आप कहाँ से? हम बैंक के एम्प्लॉई हैं जी। मैं हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और आज हम अपनी 5 दिवसीय मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं, और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सारे बैंकों के से एम्प्लॉइज आएंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। तो जो क्या वजह मानते हैं आपकी मांग अभी तक नहीं मानी गई, वजह क्या मानते हैं? देखिए जी, ये मुद्दा कई सालों से सक्रिय है। 2017 में भी 2 दिन का ऑफ दिया गया था, और वादा किया गया था कि आने वाले दिनों में 5 डे बैंकिंग लागू कर दी जाएगी। जैसा जी कि बिल्कुल गुलशन, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग भी हैं और बैंक के एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कि कह रहे हैं कि वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे ताकि उनकी जो मांगे हैं वो स्वीकार करी जाएं। आई थैंक ऑल माय कॉलीग्स हु जॉइंड अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड